2023 में ये डिसाइड हो चुका है कि बहुत सारी ऐसी डेथ्स के, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें हार्ट की मायोकार्डाइटिस, जिसमें अगर मायोकार्डाइटिस होता है वो आदमी थोड़ी भी मेहनत करता है तो वहीं तुरंत मर जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, ट्रेडमिल में वो चलने गया और तुरंत हार्ट अटैक आ गया, बिना कोई नली के सिकुड़न के हार्ट अटैक आ गया। तो अब जो बात सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अमेरिकन सीनेट ने भी कोरोना के वैक्सीन के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन लिया। ये अभी 3-4 महीने पहले की बात है, और चारों तरफ से हर अमेरिकन को, कम से कम 90% अमेरिकन लोगों ने वैक्सीन ले लिया था। लेकिन अब आगे का कोई बूस्टर डोज या कोई भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। WHO ने तो कुछ ठीक से कहा नहीं, लेकिन विड्रॉ कर दिया गया, वापस कर दिया गया है। जो दुकानों में सप्लाई थी उसको भी वापस कर दिया गया। वैक्सीनेशन से नुकसान हुआ है, हार्ट को नुकसान हुआ है, ब्रेन को नुकसान हुआ है। 4.2% लोगों को हार्ट की गंभीर बीमारी हो गई है। ये 2023 में भी पता लग गया। 2000 का दिया वो वैक्सीन 2023 में कैसे पता चला? ये ऐसे पता लगा कि जो प्रोटीन जो लगा है, सिंथेटिक प्रोटीन है, वैक्सीनेशन के माध्यम से जो लगाया गया, वो जो RNA है वो शरीर में अभी भी पाया गया। कोरोना का जो वायरस है, जिसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं, वो नहीं पाया गया। वो सिर्फ 6 महीने 3 महीने तक रहे, उसके बाद कहीं नहीं मिले शरीर में, क्योंकि उसको उतने ड्यूरेशन में निकल जाना है शरीर से। लेकिन ये सिंथेटिक प्रोटीन था। इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई कि अगर आप ऐसा वैक्सीनेशन लगाओगे और ऐसा एक RNA आप हमारे शरीर में डालोगे तो वो हमारी इम्यूनोलॉजी को कितना डिस्टर्ब करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को इतना डिस्टर्ब करेगा, कब बाहर निकलेगा ये कहीं नहीं। अभी भी 2023 में लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, मरीज बन रहे हैं, और सबको ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो सकता है। किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की भी नली सिकुड़ सकती है, किसी में भी क्लॉट आ सकता है। ऐसे ऐसे क्लॉट हुए हैं जो कोई भी एंटी प्लेटलेट ड्रग से, एस्पिरिन से, बड़े बड़े दवाइयों, सबसे अच्छी दवाइयों से भी, इंजेक्शन से भी दूर नहीं होते क्लॉट्स। तो 2023 में ये स्थिति हुई है, तो इसका जवाबदार कोरोना नहीं, कोविड नहीं, इसका जवाबदार है कोरोना में दिया गया वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन के बारे में लोगों ने अब जाके ज्यादा जोर शोर से इस बात को उठाना शुरू किया, और इतना उठाया कि अमेरिकन सीनेट को भी अपने बैकफुट जाना पड़ा। लेकिन अभी तक WHO ने उसको वो नहीं किया, डिनाई नहीं किया। लेकिन फिर भी चारों तरफ ये माहौल बन चुका है कि कोरोना वैक्सीन से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय बात नहीं सुनी जाती थी। As introduced, I'm Dr. Peter McCullough. I'm a practicing internist, a cardiologist, an epidemiologist, and I've been completely dedicated since the onset of the pandemic to doing everything I can to help each and every patient. These are my observations, and this is my analysis. There have been 2 waves of injury to the world. The first has been the SARS-CoV-2 infection, which preyed upon the frail and the elderly. And then the second wave of injury now has been the COVID-19 vaccines. The role of the WHO appears to be adverse in both of these. The vaccines have ravaged the population in the world. Worldwide, 2/3 of people took a vaccine. The United States COVID community state study shows 75% of Americans took a vaccine. Thankfully, 25% didn't. I was the only public health and public figure in the United States in writing to question the vaccines before they came out. And I did it as loudly as I could. The COVID-19 vaccines in the United States, 94% of Americans took a messenger RNA vaccine. It is the genetic code for the potentially lethal spike protein, part of the virus. It was the worst idea ever to install the genetic code by injection and allow unbridled production of a potentially lethal protein in the human body for an uncontrolled duration of time. Everything we've learned about the vaccines since they've come out is horrifying. There's not a single study showing that the messenger RNA is broken down because it's pseudo-uridinated, it's made synthetically. It cannot be broken down. There's not a study showing it leaves the body. We now have papers by Castriuta who demonstrates the messenger RNA circulating for a month. That's as long as they've looked. We have the spike protein, the lethal protein from the vaccines, found
in the human body after vaccination, circulating at least for 6 months, if not longer. And if people take an injection in another 6 months, there's another installation in more circulating, potentially lethal protein. The spike protein is proven in 3,400 peer-reviewed manuscripts to cause 4 major domains of disease. One is cardiovascular disease, heart inflammation or myocarditis. Every regulatory agency agrees the vaccines cause myocarditis. I'm a cardiologist. Before COVID, for years, we've had guidelines in cardiology. When there is myocarditis, whether it's symptomatic or not, people cannot exert themselves in athletics. It will cause a cardiac arrest. And yet across Europe and across the United States, sports leagues were injecting young people who had no medical necessity, no clinical indication with these vaccines, and we have seen a montage of cardiac arrests in young individuals. I'm telling you as an expert cardiologist, these cardiac arrests are due to the COVID-19 vaccine until proven otherwise. They are. Other cardiovascular diseases caused by the vaccine proven. Acceleration of atherosclerotic cardiovascular disease and heart attacks or cardiovascular arrest. Posterior orthostatic tachycardia syndrome or POTS, or people passing out due to low blood pressure. You have seen montages of people in the media, one after another, passing out like you've never seen before. It is the vaccine until proven otherwise. Aortic dissection, atrial fibrillation, other arrhythmias. Cardiac arrest in the absence of myocarditis has been described with the COVID-19 vaccines. The cardiovascular domain of damage in the human body from the vaccine is substantial, more than anything we've ever seen with cholesterol, high blood pressure, or diabetes. The second major domain is neurologic disease, stroke, both ischemic and hemorrhagic, Guillain-Barré syndrome, ascending paralysis that can lead to death, which it has led to death with messenger RNA vaccines, agreed to by all of our regulatory agencies, small fiber neuropathy, numbness and tingling, ringing in the ears, headaches. These are common. Third major domain, blood clots. Blood clots like we've never seen before. The spike protein is the most thrombogenic protein we've ever seen in human medicine. It's found in the blood clots. The spike protein causes blood clots. Blood clots larger and more resistant to blood thinners than we've ever experienced in human medicine. 39 safety databases, including the WHO VisiSafe and the EMA databases in the US databases. And their conclusion was to remove all the COVID-19 vaccines off the market for excess risk of death. Excess risk of death. Okay? On the floor of the US Senate, December 7th of 2022, I co-moderated a session, and our expert panel, by assent in the U.S. Senate, concluded all the COVID-19 vaccines should be removed from the market, all of them. No new boosters. And then in March 23rd of 2023, the Association of American Physicians and Surgeons, a factual, fact-based, evidence-based, consensus-driven organization, just like the two others, also concluded to remove the vaccines from the market. So I submit to you the COVID-19 vaccines and all of their progeny and future boosters are not safe for human use. अगर आपके कोई सवाल हो, कोई तकलीफ हो, कोई जानकारी हासिल करनी हो, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं स्वयं आपको उसका जवाब दूंगा।